कट क्रीज आई मेकअप जितना ब्यूटीफुल ये लगता है ना, उतना आसान ये बिल्कुल नहीं है, और वो भी दोनों आईज पे सेम करना. इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस. सो कपल ऑफ डेज अगो आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट ऑन द पेज ऑफ केविन ओकॉन. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. और ये जो वीडियो है उसमें ये आर्टिस्ट आईलैश कर्लर की हेल्प से कट क्रीज बना रही है. सो आई थॉट आई नीड टू ट्राई दिस. So in today's video, I will try this hack. So let's see how it goes. Before that, if you are seeing this face for the first time, then hello, I am Urmi. Welcome to my channel. I am a beauty blogger and a makeup artist, and I will leave my Instagram handles here. So do not forget to check me out. Now let's get started. To save some time, I have already prepped my eyelid with the concealer. I have used this L'Oreal Infallible Concealer. Now I will take brown shade and I will apply it in my outer V and in my crease, just like she did in the video. Now I'll take my curler and I'll make sure it's completely clean. Before going forward, I noticed that the shape of my curler is like this. Can you see it? It's not proper rounded, और वीडियो में जो उसने कलर यूज़ किया है वो प्रॉपर राउंडेड है. सो मैं क्या करूँगी कि ये वाले पार्ट पे कंसीलर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ जो राउंडेड एरिया है वहीं पे लगाऊंगी. तो आगे का होगा वो मुझे अपने आप से ड्रॉ करना पड़ेगा. सो अगर आपके पास राउंडेड कलर है तो वो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा. आई टेक माई कंसीलर एंड आई अप्लाई इट ओवर हियर. बिफोर पुटिंग दिस ऑन द आई, एक बार कंसीलर लगाने से पहले कर्लर को रख के देख लीजिए कि आपको कहाँ इसे प्लेस करना है. अदरवाइज अगर वो प्रॉपर जगह पे प्लेस नहीं हुआ तो वो पूरा बिगड़ जाएगा. सो आई एम जस्ट गोना पुट इट लाइक दिस. अभी जस्ट मैंने आपको कहा और मैंने इसे पूरा मेस कर दिया. नाउ आई हैव टू क्लीन दिस अप एंड आई डू इट अगेन. यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई इट ऑन दिस आई. I think I have to put it a little here. Yes, that's definitely better than this one. Now let's go ahead with this. I'll take some concealer on a flat brush like this and I'll complete this line. And now I'll bring that concealer all over my lid. यहाँ पे आप मैट अप्लाई कर सकते हो, शिमर अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है. आई एम गोइंग विद द मैट. तो ये आई मैंने कंप्लीट कर ली है और मैंने यहाँ भी पूरा क्लीन कर दिया है. नाउ आई विल ट्राई इट अगेन. प्रे फॉर मी गाइस. थोड़ा सा इट वर्कड. इट डेफिनेटली वर्कड यू गाइस. टू बी ऑनेस्ट मुझे इस हैक से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट इट वर्क ब्यूटीफुली. आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, अदरवाइज इट्स गोना वर्क लाइक मैजिक. नाउ आई विल फिनिश दिस आई ऑफ कैमरा एंड आई विल बी राइट बैक. ऑल राइट, आई एम बैक. मैंने मेरी वाटर लाइन में न्यूड काजल लगाया है और मस्कारा लगा लिया है और मेरे इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर दिया है. एंड दिस इज द फाइनल लुक. What do you guys think? I think this is really cool hack and it is टाइम सेविंग. तो अगर आप इसे ट्राई करते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. मेरी तरह गलती मत कर देना, पहले प्लेसमेंट अच्छे से चेक कर लेना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग.